All right, good morning, students. Hope you all are good. As we all know that our online classes will start from today. Therefore, we are basically going to see the topics which have been left in the school. Right. So last time we were discussing about the pollen pistil interaction, in which we have studied that all the events from pollen deposition on the stigma till it reaches the male gamete reaches to the ovule is known as the pollen pistil interaction. We have talked many things about the adaptivity, compatibility of the pollen, incompatible pollens, and receptivity of the ovary, or you can say stigma, right? And we have said that these male gametes enter into the embryo sac through the filiform apparatus. Lots of things we have talked about. Now this is the time where we will talk about the artificial hybridization, right? So hope you are able to see the things which has been written on the board. Now when we talk about artificial hybridization, artificial means it is obviously the man-made, right? It is not the natural. When we natural we talk about the pollination, right? So it is artificial hybridization. Hybridization means the producing the new progeny by mixing of two parents, right? That is hybridization. So we are talking here about the artificial hybridization. So let's see what artificial hybridization is basically, right? Now when we talk about artificial hybridization, you can see the crop breeding program, or we can say the crop improvement program. It is one of the major approaches for the crop इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. यानी जब हम क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, उसकी बेसिकली उसके कैरेक्टर्स को बिल्ड करना चाहते हैं, एक नई चीज नई प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं. सो दिस ऑल कम्स अंडर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, राइट? Now so artificial hybridization, when you talk about this, is one of the major approach of crop improvement program. Okay, hope this much is clear, right? The next thing is, it is a crossing experiment. It is a crossing experiment. Artificially we are doing the crossing, right? That means we are putting the male gamete, that means the pollen, to the stigma of the flower, right? That is the crossing experiment that we are doing, right? So this crossing experiment में होता क्या है? What we are talking about? We are talking about the improvement of the quality, right? We are talking about the improvement, crop improvement program. That means we need the such plants or the such progenies which are good, right? So when we talk about the good things, desired things, so what we will do, the desired pollen grains we will use for the process of pollination. What we will use the desired pollens, right? हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, यानी कि एक अच्छा पॉलन ग्रेन ही किसी एक स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, राइट? दैट इज द थिंग. नाउ second thing is, stigma is protected from contamination. Now when stigma will remain open, it is not guaranteed that only the best pollen will fall on the stigma. That can't happen, right? ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि there are several pollinating agents which are working for the pollination. So कुछ भी उड़ के या किसी insects के through वो stigma पर पहुंच सकता है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? We are experimenting that only the desired pollen grains will be used, as well as the stigma will be protected, कि उसमें क्या हो, कोई भी unwanted pollen grain ना आए, ठीक है? So this is artificial hybridization, and this artificial hybridization is achieved by two techniques. This artificial hybridization is achieved by two techniques. Number one is emasculation. What is that? Number one, emasculation, and number two is bagging, right? There are two techniques by which we are doing this process, this crossing experiment. First is emasculation and second one is bagging, right? There are two things. Okay, now let's see what is it talks all about emasculation and bagging. Now when we talk about emasculation, it is only limited to the bisexual flowers.
याद रखिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली बैगिंग विल बी डन, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइसेक्सुअल फ्लावर, द एंथर हैज टू बी रिमूव्ड सो दैट ऐसा ना हो कि उसके पॉलन्स क्या हो जाए स्टिग्मा पर, by any means that fall on the stigma of the same flower, right? So what has to be done, इससे पहले कि एंथर डेहिसिस हो यानी कि एंथर बर्स्ट करे, pollen grain रिलीज हो, we have to remove the anther, and this process of removal of anther is known as emasculation. This process is termed as emasculation. Hope this much is clear. Emasculation is removal of the anther before the dehiscence of the removal of anther before the anther dehiscence. So that is basically the emasculation. और ये हम क्या करते हैं basically, अगर कोई फ्लावर है हम एक forceps लेते हैं, उस forceps से what we remove the anther of the bisexual flower. That means now the flower will only left with the stigma. ठीक है? I hope this much is clear to you that emasculation is removal of the anther from the bisexual flower. Okay. Now, what is needed now? The needed thing is stigma has to be protected, right? अब क्या होता है? The emasculated flower had to be covered with a bag. ठीक है? अब हमने क्या किया? एक फ्लावर है, उस फ्लावर में से हमने this is suppose the stigma, ठीक है? हमने इसमें से क्या कर दिया है? एंथर को रिमूव कर दिया है. Now this stigma is only left, and this stigma has to be covered through a bag, या by a bag, right? Which is of suitable size. ऐसा नहीं बहुत बड़ा बैग हमने ले लिया, बहुत छोटा बैग ले लिया. This has to be suitable size, right? And mostly this bag is made up of butter paper. You should know this. ठीक है, जो emasculation, जो bagging के लिए emasculation के बाद bagging के लिए the bag which is being used is made up of majorly of butter paper का बना हुआ हो क्या होता है बैग होता है, राइट? सो नाउ हमने अब क्या कर लिया, हमने एंथर रिमूव किया. emasculation, आफ्टर emasculation we have covered the flower with the bag. इसको हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं ना. what this bagging will do, this bagging will prevent the contamination of stigma with unwanted pollens. जो pollen हमको चाहिए ही नहीं. हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं desired pollen grains की, right? That means we need the improvement. So for that improvement we need the desired pollen जो अच्छा रिजल्ट दे सके, जो फ्रूट डेवलप हो वो बेटर क्वालिटी का हो, यील्ड ज्यादा हो, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इस स्टिग्मा को किसी भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट ना होने दें, एंड फॉर दैट बैगिंग इज डन. ठीक है, उस प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, बैगिंग की जाती है. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, हम स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बारे में बात करते थे, राइट? सो स्टिग्मा क्या है, अब नाउ स्टिग्मा इज एबल टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, यानी कि वो उसने रिसेप्टिविटी अटेन करनी है. तो नाउ व्हाट विल हैपन, द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स एट द सेम टाइम, हमें दोनों चीजों को ना पता है हमारा क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैच्योर एंथर भी होना चाहिए और स्टिग्मा में भी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए. सो व्हाट वी डू, राइट, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है, देन वी स्प्रिंकल द पॉलन ग्रेन्स, द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देते हैं थ्रू अ ब्रश, राइट? तो इसके ऊपर हम ब्रश के थ्रू पॉलन ग्रेन्स को क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे, उसके ऊपर छिड़क देंगे, एंड उसके बाद फ्लावर को फिर से क्या कर दिया जाता है, रीबैग कर दिया जाता है, यानी दोबारा से उसको बैगिंग कर दी जाती है, और द फ्रूट्स इज अलाउड टू डेवलप. और हम क्या करते हैं, नाउ वी वेट फॉर द फ्रूट टू develop, right? So develop. So then now the bagging, I think, hope it is clear. After emasculation, we cover the flower, right? And as the stigma attains the receptivity, we dust the pollen grains, the desired pollen grains over the stigma, and again we rebag the flower. And what we do, we wait for the fruit to develop, right? And this is by this way, what we do, we improve the quality of the fruit that we gain, right? Now, जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि it is not needed for the unisexual flower because उसमें एंथर नहीं है, right? तो
ओनली बैगिंग विल वर्क, ठीक है, केवल बैगिंग होगी। इससे पहले कि फ्लावर ओपन हो जाए क्या किया जाता है, यूनिसेक्शुअल फ्लावर को बैग कर दिया जाता है। और जब अगेन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है, व्हाट वी डू, वी बेसिकली does the pollen grains on the flower and we wait for the desired fruit. So here it is all about the artificial pollination. Hope you understand the concept and you will share with the notes and you will make the notes of this. Thank you.